India in terms of music exposure and knowledge about music is comparatively less in compared to the mainstream Indian music. So I think as a as my experience and a scholar of music, I think this digitization, this modernization and globalization, rather I would say not modernization or digitization and globalization have given the required exposure to music of Northeast India, which was not before, because it is isolated place. Then, and you will be surprised. Sikkim is called the most smallest state of India, but it is so complex when it comes to the ethnicity. There are so many cultures, so many traditions. We only know Bhutia, Lepcha, Nepali, but this is more complex than anything else. So each ethnicity has different music. So now, because of this exposure through this social media, through the technologies and globalization, and as I myself and my students are standing because of this thing, that we connect to this rest of India, and people are now knowing to this music love form. So I have one PPT where just before we start this presentation, I'll just end with this only three videos, very small clippings. But I just want to connect. I have second point is that what Mayam has said. I when I was in Lavanya, Mayam was giving a lecture, then I could relate. She was talking about sitar, Ravi Shankarji, because I am a sitar student. So there I could realize that in this lecture you will see the what new thing in Sikkim is that since people are getting exposure to different music and new, for me I think it's positive that students or modern musicians, new generation are inclined to classical music, and here I am putting the other way, like, can you play the things? See, this is Nepali sarangi. It's sarangi, but it looks different than what mainstream sarangi is. Next, next this one. Yeah. So here I am playing this one on Nepali. So it's a very common, very popular song. So I don't know. I'm not saying anything good or bad. I don't know what I have done, but this music is so lively that we get inspiration. I know that I don't sing. I have no words. So my one expression is that my instrument. And yes, there are classical. I mean, the madam explained we have this I played it in a very classical way, but you compare the Nepali song, it is not less than any classical accent the way you are playing. So this is modern thing, which is, I mean, more this is modern word is not right. Contemporary thing which is happening is that people are youth of Sikkim or any Northeastern, so they are being exposed to various music, and they are including. But having said that, the last line I would say is that in Sikkim culture, in every beat of their life, there is music. You cannot imagine. You go to, I invite all of you any day you visit to Sikkim. You just go to MG Mark. It's a very common marketplace. You will see people playing sarangi and singing. In each and every aspect of the music, there is local music. There are amazing music performance. No rituals is there without music. So they enjoy music. They live music, and till now it looks very positive towards everything. So last one.
point is that this and many more other forms might be there. They really coexist really good in the state of Sikkim. So we really don't worry about the negative effect of this. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next is Dipya Jyoti. Technical support, please. Namaskar, my name is Divyas Dubarali. I'm from Sikkim University, PhD scholar. So my topic is effect of digitization of Nepali folk music of Sikkim. So I'll go thoroughly by shortly. Okay. So introduction. Sikkim is a stunning state in northeast India's breathtaking Himalayan highlands. Sikkim is recognized for its vibrant folk tradition and rich cultural history. The traditional folk music genres of Sikkim have been significantly impacted by digitization, along with many other cultural and creative disciplines. The aim of this study is to understand and analyze the effect of digitization on Nepali folk music of Sikkim. The study has focused on the northeastern state of Sikkim. In total, there are 6 districts in Sikkim where this research has been conducted. The perspective of Nepali direct. Okay. The prospects of Nepali folk music in the digital era are promising as technology continues to play a significant role in the preservation, promotion, and global recognition of this traditional music genre. In the digital ages, Nepali folk music has the following prospects. Number one is global presence and audience participation, the cultural documentation and preservation, cross-gender fusions and collaborative creativity, online performance and live streaming, resources for education and cultural awareness, digital and local musicians empowerment, combining competence and combining traditional and contemporary elements. The future of Nepali folk music in the internet age is full of possibilities for worldwide outreach, creativity, and preservation. Making responsible use to technology and realizing its potential will be essential for ensuring that this valued musical legacy endures and continues to resonate with listeners in around the world. Nepali folk music can withstand the test of time and inspire an enthrall future generation by embracing the digital age while retaining its authenticity and cultural importance. So I'll do directly to conclusion point. So the advantages of digitization have helped revive interest in traditional music, empower local musicians, and combine many musician genres through the use of technology and social media. Sikkim digitization of Nepali folk music clearly has many positive aspects, but it also has several drawbacks that must be addressed if this musical heritage is to retain its authenticity and cultural relevance. It is essential to strike balance between the advantages of technology and necessity to safeguard traditional practices in order to ensure that Nepali folk music thrives in the digital era while keeping its deeply ingrained cultural character. Thank you so much. Thank you so much. Next is, I would like to call Mr. Raju Rawat. Please. A very good afternoon to each and every individual present out here.
My name is Raj Rao from the Department of Music, Sikkim University, and the title of my research paper is Ethnographical Study of Lexep Town, an Ethic Perspective of Music and Religion. Already, one of our senior fellow scholar has already told you about the Sikkim and its, and I will directly like to go in the main aim of my research paper. The research aim to make audience confront with the ethnographical study of Lexep Town in perspective of folk music and religion. In Lexep Town, there is a Lexep Town which is in West District of Sikkim, and we can find different communities living over there like Lepcha, Bhutia, Rai, Tamang, Limbu, Gurung, and Khars. They have their own rituals, beliefs, music, and dance. So I would like to show you some dance and music form of that place. That place. You can skip this slide. Next, then you can play. This is a home of Bhutia community. The previous one. Yes, this one. You can go to next slide. This is a true part of Lecture community. Please play the video. This lecture community basically worship the nature. They worship mountains, river. Yeah, you can go to next slide. This is a Chabrung Nath of Limbu community. Could you please play again? Please play it again. Next one, please. Next slide. Next. Okay, some technical issue has been aroused. So this is a Chabrung Nath. It is a percussion instrument which you can see. Few boys artists round up circly and they perform like this only. So you can go to next slide. This is a Maroni of Magar community. The most important thing about this music and dance art form is that the boy artists used to wear as a lady, and they wear dresses of ladies and they perform like this. Play the video. So you can go to next slide. This is a Sorathi of Gurung community. I think some technical issue has been aroused. So these were the folk tradition of Sikkim, as you saw just now. So I would like to conclude my research. So thank you so much.
Thank you. Sorry for the inconvenience which has been created because of the technical glitch. We are so sorry. Next is Ashish Shankar. A very good evening to one and all. My name is Sashi Shankar. This is a scholar from Department of Music, Sikkim University. Can I have the PPT, please? The topic of my study is the divinity of Nepalese folk musical form Deusi and Vailo in Sikkim. These are the folk songs which is basically sung in the festive occasion of Diwali. Next slide, please. So, in the Nepalese community, the Deepavali ceremony is also known as the festival of Diwali is known as Tihar, and it is celebrated in a very grand manner. And on this occasion, the two most important folk songs which are performed are Deusi and Bhailo. It is only performed specifically in this occasion. And next slide, please. Next slide. So, in the 5-day festival, which, as you can see, the first day is Kak Tihar, second Kukur Tihar, third is Gai Tihar, which is also known as Lakshmi Puja, and Goru Tihar and Bhaitika. So, on the occasion of Lakshmi Puja, only the girls sing the Bhailo. Next slide, please. Next slide. So, women and teen girls, go from one house to another house in the entire community and they sing Bhailo. And the composition consists of the epic Ramayana and about the King Bali and the story of Baman, how generous he was. Next slide. And Deusi is performed from the next day. After Lakshmi Puja, from the next day, Deusi is performed by the boys and men. And they also sing about the epic Ramayana, and in the end, they grace the house and the community with blessings. Next slide. So the composition is in such a melodic structure, and it's such inspiring that people feel a very spiritual bliss. It consists of the epic Ramayana, and it encourages them to become like Lord Rama. So I would like to conclude on this question. Thank you. Thank you so much, sir. Next, I would like to call Mr. Mehala for their presentation. Please, sir. For the next presentation, please, Mr. Arshdeep and Ms. Palak Sood, be ready. Very good evening to everyone, my fellow participants, the organizers, professors, dignitaries. My name is Meban Lampang Lingdo. You could call me Meban. I'm from Shillong, Meghalaya. And the topic, my presentation, I did not use the slides since I have a lot of slides, but we don't have much time. So the name of the topic is Kadui Tara, which is this instrument. And then from the hearth
to the concert halls and academic institutions. So in this research, we are looking at the journey that this instrument travels right from the hearth. Okay, so let me start with a little bit of history about this instrument. This is known as Duithara, which is also similar to Dotara of Assam and then Bengal. And then if you go to Bangladesh, also they have a similar instrument like this. So actually back then, earlier, this instrument was usually played at home. So it is known as a home musical instrument and it's usually played especially during night time. Why? Because daytime maybe earlier you don't have time to spend a day and perform music. So to entertain themselves, since earlier they don't have any TV or radios or any internet, so the only way to entertain themselves is through music. So they use musical instruments. There are lots of other musical instruments that they use to play at home, but this is also one of them. And this is one of the most prominent string instrument among the Khasi tribe. So that is the about this instrument. So back then, and then we use this instrument to accompany folk songs, ballads, and then in today's world we'll use other types of genres as well. It's not just folk songs. And then I will not go into the objectives and then the literature review, but we'll just go directly to the discussion. Like I've said, like this is a home musical instrument, but with the coming of the All India Radio Shillong station, it was established in 1st of July 1948. So from that time onwards, this instrument were heard in radio stations, so which is also related to what we are talking about in this conference about technology. So, but back then, there were very few Duitara players who would take the instrument to recording studios of All India Radio. So from 1960, during the 1960s onwards, we have had some few of them, and then we have also heard some of their recordings. But if you look at the journey of this instrument, it has really come up in the music scene, I would say, in the late 90s and early 2000, where you will hear this Duithara in different music albums of different bands, be it secular or the Christian music as well. So this instrument has traveled, say, from the hearth or from the family, and then it comes to the performing platforms, different performing platforms. We have in Shillong and then in Meghalaya, we have had a lot of cultural programs organized by different cultural organizations and then the government and different schools as well. So you will witness this instrument, the use of this instrument and lots of other instruments. So which means that I would like to say that it has traveled from the family, from the hearth, and then it goes to the performing platform. And in the early 2000s, Nehu or the Northeastern Hill University, they started the PG diploma in 2003. So in 2003, they also introduced this instrument, but just a little bit about the theory of this instrument. So there were no practicals. And then in 2005, St. Anthony's College also started the BE music, where they include this instrument as one of the paper, which is both the theory and practical. So it has entered into the academic world. And then in 2007, Martin Luther Christian University started the music department with a master's degree, and then they also include this instrument. And now we also have lots of other students who have also done their research, and I also completed my PhD in this instrument. So my focus is only on the playing techniques and not on the other aspect. Of course, I've also looked a little bit about the crafting and a little bit about the history and origin, but my main focus is on the playing techniques. So let us listen a little bit about this different style, because my focus is on the different styles that they used earlier and then back then and then in this generation. So earlier they would use something like this.
earlier they would use something like this to play these folk songs. So the vocal would sing maybe at home while telling the stories. So those are the style that they use back then earlier. But nowadays, there's a lot of improvisation and there's a lot of, I would say, westernization as well. Because of the exposure that our generation, we have been exposed a lot with the internet through YouTubes and a lot of other social media platforms. We also try to, say, compete with the Western world. And you will also witness the use of this instrument in one of the movie, The Rock On 2. So this instrument is also one of the main instruments in that song, where Asha sang that song along with the Khasi artists. And then they use a lot of slide. And then nowadays they also use chords and then finger pick, something like this. Okay, so earlier they never used finger pick, they use only the plectrum, but nowadays they've also changed. So there's a lot of changes that you will witness. And then last year, that was 2002, this instrument, it was a privilege for me to go to one of the biggest folk festival, I would say, in Jodhpur. So we got a chance, me and my friend, we got a chance to collaborate with Sas, one of the folk artists from Jodhpur, and then we did some collaboration with them, and then from another artist, Gareth Bonello from Wales. So we also play these Welsh music and the Rajasthani folk with this instrument. So I would conclude by saying that earlier there were very few, and maybe we haven't heard any female Dwitara player, but now we have had a lot of females Dwitara who are very enthusiastic in learning as well as teaching this instrument. So thank you. We are so sorry, sir. We have to interrupt you for this. Now I will request to Arshdeep, sir, kindly just go through with your paper presentation as quick as you can. Please. Very good evening. Good evening to all. My name is Arshdeep Singh. I'm from Punjab University, Chandigarh. I'm a research scholar. Without taking not so much time, I would like to come on the abstract. My topic is the contribution of Punjabi folk literature in music. So, Punjabi folk music is a tradition of oral literature from generation to generation. Punjabi folklore and its culture is a highly rich form that denotes the living style and the culture of the Punjab. Punjab has always been influenced by mixed culture. The culture of Punjab defines how the people of Punjab are not only strong, well-built, but also kind-hearted and brave people, which enables them to have creative imagination in arts and crafts. Punjab has a multicultural form and the uniqueness of its art. There are many forms of folklore in Punjab. That is the folk literature, which is used in the Punjabi music, folk music. There are the two basic forms of Punjabi folk literature which are used in music. That in which different forms of folk songs like Bujharta, Akhan, Muhavre, Kirne, Alaunia, etc. The second is folk stories, folk tales. In folk tales, we have very famous folk form of Punjab, that is Heer. Heer is, I would like to pen some verses from Heer. Asi fakkar Allah de haan pure, kuj mangala asi asanthi goriye ni. मैं ते खोल के गल सुनावना हाँ नी अनोखे सालुआं वाली नी. And we have also the Tappa form in Punjabi folklore.
I would like also to define some verses from Tappa. That is, बूहे बंद हम साइयां दे, हुण असां नित मिलना दिन लंघ गए जुदाइयां दे. Uh, so we have a shortage of time. I would like to conclude all. In this study, I have tried to introduce the value of folk literature, which so enriched the cultural value of Punjab region. Many literature forms are found in Punjabi folk music. Punjabi folk literature has great role in music. Many folk dhuns are formed by the various styles of literature. Every folk song has its own role to enhance the richness of Punjabi folk literature. Thank you so much. Thank you, Ashdeep sir. We really appreciate your support. And I will now call to Palak for their paper presentation. यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पलक सूद है और मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की शोधार्थी हूँ। आज मैं जिस विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो है समाज में लोक साहित्य का महत्व। जैसा कि थोड़ी देर पहले सभी गुरुजनों ने भी कहा, भारतीय समाज में लोक साहित्य का दर्शन जन्म से लेकर हर खुशी के मौके, तीज त्योहारों ही नहीं, मृत्यु तक के दुखद गीतों में भी होता है। इसलिए समाज और लोक संगीत का गहरा संबंध है एवं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोक साहित्य क्या है, लोक गीत क्या है, लोक गाथा क्या है, ये हम सब सुबह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मैं डायरेक्टली लोक साहित्य के महत्व पर आऊँगी। समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं केवल उन उदाहरणों का ही वर्णन करूँगी जिनको देखकर मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं ये विषय लूँ और इस पर काम करूँ। बहुत से ऐसे महत्व हैं जो हमारे लोक साहित्य को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उनमें से कुछ ऐतिहासिक भी रहते हैं, भूगोलिक भी रहते हैं, सामाजिक भी रहते हैं, आर्थिक भी रहते हैं। तो कुछ उदाहरणों का वर्णन करना चाहूँगी। लोक साहित्य हमें मुगलों के शासनकाल में भी जिस प्रकार देश में अशांति एवं दुर्व्यवस्था थी, इसका चित्रण अनेक लोकगीतों में भी पाया जाता था। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अनेक गीत भी मिलते हैं जिनसे ऐतिहासिक घटनाओं का प्रामाणिक तौर पर उदाहरण भी मिलता है। जैसे वीर कुंवर सिंह की वीरता एवं बहादुरी का वर्णन एक गीत में कुछ इस प्रकार देखा जा सकता है। लिखी पतिया के भेजन कुंवर सिंह ईश्वर अमर सिंह भाई हो राम, बाबू कुंवर सिंह भाई अमर सिंह दोनों अपन है भाई हो राम, दानापुर से जब सजलक हो कमियों, कोइलवर में रहे छा हो राम। अर्थात इस गीत में कुंवर सिंह की सेना का पटना से चलकर कोइलवर में आने का उल्लेख किया गया है। अगर भूगोलिक या आर्थिक महत्व के उदाहरण की बात करें तो लोक कथाओं में सोने की थाली में भोजन करने एवं आभूषणों की प्रचुरता का वर्णन भी किया गया है। जिस तरह एक स्त्री पति के प्रदेश जाने पर कहती है कि सोने की थाली में जेवना परोस ले, जेवना ना जेवे अलबेले, बलमू कलकत्ता निकल गए जी। कुछ सामाजिक महत्व भी देखने को मिलता है। लोकगीतों में पति पत्नी, भाई बहन, माता पुत्री, ननद भावज और सास बहू के संबंधों का वर्णन मिलता है तथा पुत्री के विवाह हेतु वर ढूंढने से लेकर उसकी विदाई तक में परिवार द्वारा रोने का चित्रण भी देखने को मिलता है। धार्मिक महत्व में गंगा जी में स्नान करने से पापों के धुलने की बात, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आदि का वर्णन भी भजनों के माध्यम से किया जाता है। व्रत त्योहारों में देवी देवताओं से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। इसके अलावा धर्म संबंधी बातों का वर्णन और धर्म और नीति की शिक्षा देने के लिए लोक कथाओं का बहुत महत्व रहा है। अंतोदगतवा मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय समाज और लोक साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का यह कर्तव्य बनता है कि वे ऐसे लोक साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व के सदाभाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में सक्षम हो। विश्व स्तर पर भी भारतीय समाज और लोक साहित्य का प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम बना रहे। ये भारतीय साहित्यकारों और जन समुदाय का नैतिक दायित्व भी बनता है ताकि भारतीय समाज और लोक साहित्य जगत का मार्गदर्शक बना रहे। धन्यवाद। Thank you so much, Palak Sood ma'am. Now I would like to call Ms. Krishna Mahavar for their paper presentation. Technical support, please.
Meanwhile, I will request to Mr. Rahul Barodia, Anjana Baret, Akhilesh Kumar Pandey, Anirban Kumar, Atish Tamang, Anju Borar. Please be prepared for their presentation. नमस्कार सभी को। आज का जो मेरा पेपर प्रेजेंटेशन है उसका टाइटल है फड़ वाचन परंपरा। बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा आप विजुअल देख रहे हैं, फड़ एक पेंटिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राजस्थान में फड़ कला एक ऐसी विधा है जिसमें चित्रकला व गायन दोनों का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है। आज तक मैंने ऐसी कोई आर्ट फॉर्म नहीं देखी जिसमें चित्र भी साथ में हो और साथ में उसका गायन भी किया जा रहा हो, उसे बांचा जा रहा हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, फड़ गायन परंपरा पे मैं फोकस करते हुए स्टार्ट करती हूँ कि फड़ गायन जो है भोपा और भोपी के द्वारा किया जाता है। भोपा जो उसके साथ चित्र के बारे में डिटेल देता है, तो जब भोपा फड़ के आगे उसमें बने चित्रों को गाकर व नृत्य का प्रदर्शन करता है तो उसकी पत्नी, जिसे भोपी कहा जाता है, वो भी उसे गायन व नृत्य का सहयोग करती है। फड़ चित्र एक बड़े आकार के कपड़े पर निर्मित होता है जिसे घटना के साथ साथ खोला भी जाता है या वो एक साथ पूरा दीवार पर खुला भी रहता है, या एक साथ पूरा का पूरा दीवार पर खोल दिया जाता है, या रस्सी के सहारे टांग दिया जाता है। भोपी जो कि पत्नी है भोपा की, हाथ में एक दिया लेकर जो भी वो गा रहा है उसी घटना के सामने उस दिए की ओर इशारा करती है। और इस तरीके से गायन के लिए भोपा एक संगीत यंत्र का भी सहारा लेता है जिससे 2 तार होते हैं, उसे रावण हत्था भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि ये पूरी तरीके से पारंपरिक चित्र शैली है, इसलिए कई प्रकार के विधि विधानों और संस्कारों का भी इस चित्रांकन में सहयोग किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। और सबसे पहले जब चित्रांकन आरंभ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला स्ट्रोक जो है घर की कोई कुमारी कन्या से लगवाया जाता है और फिर पूरे कैनवस को कई भागों में बांट दिया जाता है। कथा के अनुसार उसमें मुख्य पात्र को बीच में और सहयोगी चरित्रों को उसके साइड में अंकन किया जाता है, और इस तकनीक को मात्र जोशी परिवार के को ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फड़ गायन को फड़ बाँचना बोलते हैं। फड़ बाँची क्यों जाती है, इसके पीछे रीजन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए पूरा का पूरा गांव एक मन्नत मांगता है, और उस मनोती या मन्नत के पूरी हो जाने पर सब मिलकर देवता के फड़ को बचवाते हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो फड़ बचवाने वाले दिन भोपे को न्योता दिया जाता है और वो अपने सारे नाते रिश्तेदार संबंधियों आस पड़ोसियों को भी आमंत्रित करता है। और अगर गाँव छोटा है तो पूरे के पूरे गाँव को ही न्योता दे दिया जाता है। जो भी व्यक्ति फड़ सुनने आते हैं वो सबसे पहले उसकी आरती उतारते हैं, और फड़ बाँचने के दौरान बीच बीच में प्रसंगों में भोपे को पैसे देना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रोता जो है फड़ में बाबूजी देवता का वास मानते हैं, तो इसलिए पूरे टाइम वो हाथ जोड़कर नमन करते रहते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने में जब देवता सो जाते हैं तब फड़ वाचन कार्यक्रम कहीं नहीं होते हैं। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में भी फड़ नहीं बाँची जाती। भाद्रपद माह की नवमी और दशमी और चैत्र नवरात्रि में फड़ बाँचना सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है, और जिस स्थान पर फड़ बचवाई जाती है उस जगह भोपा उसे 2 बांसों की सहायता से खड़ी कर देता है, और उस जगह को पवित्र करने के लिए अगरबत्ती जलाकर दीप प्रज्वलित कर धूप बत्ती वगैरह करता है, और फिर रावण हत्था बजाते हुए देवता का फड़वाचन करता है। नेक्स्ट प्लीज। ये रावण हत्था है। भोपा फड़ बाँचने के दौरान रावण हत्था नामक यंत्र का इस्तेमाल करता है, और यह सारंगी के समान होता है। बहुत ही सरल वाद्य है जिसे गज के द्वारा बजाया जाता है, और गज के दोनों सिरों पर घुंघरू बांध दिए जाते हैं जो स्वर तो देते ही हैं, साथ में ताल देने का भी कार्य करते हैं, और इस वाद्य को भोपा स्वयं ही बना लिया करते हैं। नेक्स्ट लास्ट। पिछले कुछ दशकों से जब सामाजिक परिवर्तन हुए तो इस लोक कला का स्वरूप बहुत बदल गया है। आर्थिक व सामाजिक परिवेश में फड़वाचक भोपा तथा पारंपरिक फड़ श्रोता समाज अब बहुत ही प्रभावित हुए हैं, और इनके बच्चे शिक्षित होकर अन्य व्यवसाय करने लगे हैं। फड़ बचवाने वाले समाज भी सिमट गए हैं, इनकी मांग कम हो गई है। फड़ चित्रों को लोग घरों में अब मात्र सजावटी सामान के रूप में काम में लेने लगे हैं। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Next, I will call Mr. Rahul Barodia for his presentation. Namaskar. My topic is the practice of in-house folk song and the impact of digitalization in Indian context. मेरा नाम राहुल बरोदिया है और मैं फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स महाराजा साहेबजादा यूनिवर्सिटी से आया हूँ। समय की काफ़ी मर्यादा रखी हुई है। प्रेजेंटेशन मेरा है
लेकिन समय की कमी की वजह से मैं मेरे प्रेजेंटेशन के कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। एक टर्म फोकलोर हम सुबह से सुनते आ रहे हैं, हम समझते भी हैं। एक बात जो सुबह आदरणीय पद्मश्री चंद्रप्रकाश देवल सर ने करी थी, वो था कि हमारी जो लोक कलाएं हैं उसमें हमारे परिवेश में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ है, और ये स्त्रियां हमारी दादी, नानी, माँ, बहन, अलग अलग शक्ति के अवतारों के रूप में हमारे आसपास रहती हैं। तो इन स्त्रियों के कारण ही मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी बहुत सारी जो विधाएं हैं लोक कला की, वो जीवित हैं। टाइप्स ऑफ इन हाउस फोक सॉन्ग के अंदर जैसे हम बात करते हैं, चक्की के गीत हैं, पनिहारी के गीत हैं, थाल या भोग के गीत हैं, लोरी है, झूला है, ये सब जो लोकगीत प्रकार हैं, ये हमारे स्त्रियों के परंपरागत व्यवहार के कारण और उनकी प्रैक्टिस के कारण हैं। अब उसके बाद में मेरा एक मुख्य मुद्दा जो रहता है वो एप्लीकेशन ऑफ इन हाउस फोक सॉन्ग्स का है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो फोक सॉन्ग है या लोकगीत हैं, ये स्ट्रेस रिलीज हार्मोन्स कॉर्टिसोल जैसे रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से काम का जितना जो भार स्त्रियों के ऊपर रहता है वो उन फोक सॉन्ग्स की या लोकगीतों की वजह से कम हो जाता है। और ये जो लोकगीत है ये भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों को पुनर्स्थापन करने का काम करते हैं। मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से ऐसी बहुत सी बाबतें हैं जो हमारी लोक कलाओं के साथ में जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो जैसे चक्की के गीत हैं या पिसाई करते समय जो गाने गाए जाते थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो गए, क्योंकि हमारे पास मशीनें आ गई। अब इसका दूसरा ये भी असर होता है कि न सिर्फ लोकगीत गए या वो कला गई, साथ में हमें जो रोज पिसा हुआ जो आटा मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसका स्वास्थ्य पे भी असर हो रहा है, और जो स्त्री घर की माँ या दादी जो चक्की चलाती थी उसकी फिजिकल फिटनेस का भी लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारा हमारा रिसर्च रहा है। जैसे लोरी के ऊपर भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो शास्त्र कहता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर श्रुति स्मृति का बहुत महत्व होता है। तो माँ और बच्चे का सबसे पहला संवाद लोरी के रूप में होता है, और भले ही बच्चा उस शब्दों को न समझ पाता हो, लेकिन श्रुति स्मृति के आधार पर वो अपनी माँ के उस संवाद को याद रखता है। आज धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ में ये जो पूरा एक माँ बेटे का कम्युनिकेशन का व्यवहार था, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो मेरा बस इतना ही कंक्लूजन था कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन भी करते हैं तो हमारी इन लोकगीतों की परंपरा, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक रूप से हमारी धरोहर के रूप में चली आ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। Thank you everyone for your kind support, and I will apologize to other participants. We are like shifting their presentation for tomorrow as we have time constraint, and the next session we are about to start, and we just have 10 minutes break for your tea time, and after that we'll get together here, and definitely we'll start the next program. Thank you so much. You all may take your tea break. Then after we'll again gather here. Thank you so much.
मेरा आप सभी से अनुरोध, जल्दी से चाय लेके प्लीज हॉल में इकट्ठे हो जाइए ताकि हम अपने कार्यक्रम को टाइमली स्टार्ट कर सकें। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छे वक्ता आईजी श्री विकास कुमार जी जुड़े हैं, जिनको सुनने के बाद आप सभी को बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए जल्दी से आप सभी लोग चाय लेके हॉल में आ जाइए प्लीज। लो हो गया, बंद कर दो। यही करना था क्या?